हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एसक्यूएल की प्रॉब्लम। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड आई एम वेरी श्योर आप सब लोग यहाँ से कुछ नया सीख कर जाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रॉब्लम को। इसमें हमारे पास एक ही टेबल है, इस टेबल का नाम है होम्स। इस टेबल में हमारे पास दो कॉलम्स हैं, वन इज आईडी एंड अदर इज पीपल। आईडी इज होम आईडी एंड पीपल इज द कॉलम दैट हैज नेम्स ऑफ पीपल लिविंग इन दैट होम। तो यहाँ पर पीपल के नेम कॉमा सेपरेटेड है। हमें इस टेबल को एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि हमें हर एक होम मेंबर के लिए एक सेपरेट रो प्रोवाइड करनी है और हमारी रिजल्ट टेबल कुछ इस तरह से दिखाई देगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं होम नंबर 1, होम आईडी 1 के लिए जहाँ जो 3 मेंबर्स थे उन तीनों के लिए एक एक सेपरेट रो हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। तो इस तरह का कुछ आउटपुट हमें लेकर आना है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे इन mysql. But before getting into the solution, I would recommend everyone try it yourself. I will provide the query to create the table in description. So give it a try on pen paper or mysql as you want and then jump to the solution. तो हम यहाँ पर हैं mysql के सेटअप में और हमारी टेबल होम्स कुछ इस तरह से दिखाई देती है जैसा कि अभी हमने एक्सेल में देखा। तो इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए, सॉल्व करने के लिए जो अप्रोच हम यूज करने वाले हैं वो मैं दोबारा एक्सेल में समझाऊंगा। तो कुछ एसक्यूएल वर्जन्स में आपको यहाँ पर एक स्प्लिट फंक्शन मिल जाता है जिसमें कोई भी टेक्स्ट अगर आप डालें और उसको स्प्लिट करना अगर आप चाहें, एक कॉमा बी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो वो इस तरह से कॉमा बी उनको स्प्लिट कर देता है। बट अनफॉर्चुनेटली माई स्पार्क में हमारे पास इस तरह का कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है, ऐसा मैं जानता हूँ। स्पार्क सीक्वल में ऐसा एक फंक्शन अवेलेबल है, स्प्लिट। तो हम देखते हैं माई एसक्यूएल में इसको कैसे सॉल्व करेंगे और इसी तरीके से आप किसी अदर एसक्यूएल वर्जन में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। इसके लिए मैं सहायता लूंगा एक्सेल की। तो इस प्रॉब्लम को मैं दो स्टेप्स में यहाँ पर अप्रोच करने वाला हूँ। इन फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, ये जो मेरी मेन टेबल है मैं इसको कुछ इस तरह के फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। तो पहले मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ कि कितने यहाँ पर लोग हैं इस घर में। तो यहाँ 3 है, यहाँ मैं देख रहा हूँ इस रो में 2 हैं, यहाँ है 4। तो मैं क्या करूंगा, अगर इस घर के लिए 3 रोज हैं तो लेट मी जस्ट डिवाइड इट, रिपीट दिस रो फॉर 3 टाइम्स। यहाँ पर 2 हैं तो लेट मी रिपीट दिस फॉर 2 टाइम्स एंड यहाँ 4 लोग हैं तो लेट मी रिपीट दिस फॉर 4 टाइम्स। तो ये मेरा पहला स्टेप होगा कि मुझे इस मेन टेबल से मुझे कुछ इस तरह की एक इंटरमीडिएट टेबल बनानी होगी। देन अगेन इन नेक्स्ट स्टेप में इस टेबल से, सिंस मेरे पास यहाँ 3 रोज हैं हर एक बंदे के लिए, हर एक जितने मेंबर्स हैं उतनी रोज हैं मेरे पास। इन ईच एंड एवरी रो आई कैन गेट, like in first row I can get the first member, in second row for that I can get the second member. Somehow we will just see how we can do this as well, or something like that I want to do, like person row and so on. तो ये इंटरमीडिएट टेबल बनाने के बाद मेरा एम रहेगा कि मैं एक और कॉलम इस इंटरमीडिएट टेबल से इस तरह का कॉलम हासिल करूं एंड देन वी विल गेट अ डिजायर्ड आउटपुट लाइक दिस। दिस इज व्हाट वी वांटेड। तो आइए इसको समझते हैं कि हम mysql में कैसे सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं mysql वर्कबेंच के सेटअप पर। तो सबसे पहले मुझे जो इंटरमीडिएट टेबल यहाँ पर बनानी है उसके लिए मुझे पहले चाहिए होगा कि यहाँ मुझे इसको डिवाइड करना होगा नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ पीपल एक कॉलम यहाँ पर मुझे देना होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिलेक्ट ऑल कॉमा फ्रॉम होम्स एंड मैं एक और कॉलम यहाँ पर लिखूंगा। तो नंबर ऑफ पीपल मुझे चाहिए, तो नंबर ऑफ पीपल एज यू कैन ऑब्जर्व नंबर ऑफ पीपल आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉमास प्लस 1। अगर यहाँ 3 लोग हैं तो उस पूरे टेक्स्ट में 2 कॉमा है, अगर यहाँ 2 लोग हैं तो 1 कॉमा है। तो नंबर ऑफ कॉमास निकालने के लिए मुझे काउंट जैसा कोई फंक्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। कई लोग सोच रहे होंगे जैसे पाइथन में अवेलेबल होता है, तो आई कैन यूज अ हैक। मैं यूज कर सकता हूँ लेंथ का, लेंथ ऑफ पीपल कॉलम माइनस लेंथ ऑफ रिप्लेस। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, पीपल कॉलम में से जहां जहां भी मेरे पास कॉमा है उसे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग से, एम्प्टी स्पेस से। तो मेरे पास ये जो लेंथ आएगी ये आएगी नंबर ऑफ कॉमास की, बिकॉज यहाँ जो लेंथ है वो है विद कॉमास एंड यहाँ जो लेंथ है वो है विदाउट कॉमास। तो मेरे पास जो डिफरेंस आएगा वो आएगा नंबर ऑफ कॉमास एंड आवर पीपल काउंट इज नंबर ऑफ कॉमास प्लस 1। तो मैं इसे लिखूंगा एज पीपल काउंट फ्रॉम होम्स। लेट्स रन दिस and as you can see we have got the desired output. In first Ravi Manoj Surbhi we have 3, in Rahul Rohit we have 2 and Rishabh, Hardik, Surya, Yuzi we have 4.
So this step is just achieved. In the next step, I need to actually repeat these rows as same times as the people count. So this is how we're gonna do that. So for that we have another hack. तो अगले स्टेप के लिए मैंने एक टेबल क्रिएट की है जिसका नाम है nums और इसमें मैं वैल्यूज दूंगा इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर लाइक 1 2 3 4। तो और इसको मैं ले जाऊंगा मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि मैक्सिमम 4 पीपल आर देयर इन अ होम। देयर आर 2 3 एंड 4, तो मैक्सिमम नंबर 4 है तो मैं इसे 4 तक ले जाऊंगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ये आपको कुछ ही टाइम में समझ आ जाएगा। तो मैं इसमें वैल्यूज ऐड करता हूँ। तो एज यू कैन सी हमारा नम टेबल कुछ इस तरह दिखाई देती है। और अब मैं बताता हूँ इस नम टेबल की मदद से मैं कैसे हमारी इस टेबल की रोज को रिपीट करूंगा। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैं अब करूंगा नम्स टेबल को ज्वाइन विद दिस टेबल जो यहाँ स्क्रीन पर विजिबल है, एंड आई विल ज्वाइन इन सच अ मैनर कि ये जो रो है जितने भी पीपल काउंट है उतने टाइम्स रिपीट हो जाएगी। लेट्स मी जस्ट शो हाउ इट्स डन। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम होम्स, ज्वाइन नम्स ऑन। यहाँ ऑन कंडीशन इज the critical part, so pay attention here. The on condition I will write in such a manner that I will join people count with num column, that the only column, and I will write the condition in such a way that this this num column should be lesser than or equal to the number of people living in here. So number of people is this, so I will just put this here. Number of people should be greater than or equal to nums dot num, एंड यहाँ मुझे होम्स लगाना होगा, होम्स डॉट पीपल, एंड इसको मैं ऑर्डर बाय कर दूंगा होम्स डॉट id से फॉर बेटर व्यू, एंड वी हैव गॉट अवर रिजल्ट। लेट मी जस्ट शो। यस, सो एज यू कैन सी here are 3 members in this home and we've got this row 3 times, id1. In id2 we have 2 people in that home and we've got this row 2 times, and id3 there are 4 people and we've got this row 4 times, and this column we got from num table. And there is one more thing to notice, हमारे पास एक कॉलम जो num आया है, इस num कॉलम की हेल्प से if you can see this is different for every row, it is in a sequence. So we can do what, after splitting this string, there are 3 people, it will be split in 3 parts. With this column's help we can refer to first part, with this row we can refer to second part, and with this row we can refer to third part, and in this manner we can get a column where there will be only a single column. How it's done? So let me just show you. We will use a function called substring index in mysql. So I'll just write a query to show how it works. Select substring index. I will write something here in, suppose first Ravi, comma Manoj, comma Surbhi. This is the string. I took it from here, first row, and now next thing we need to write it. How to split? We are splitting with comma, and the next thing is index. सबस्ट्रिंग इंडेक्स ये फंक्शन क्या करता है, ये आपके लिए आउटपुट में प्रेजेंट करेगा। ये जो नंबर दिया है मैंने यहाँ पर 1 दिया है, तो फर्स्ट कॉमा के लेफ्ट में जो भी पार्ट है स्ट्रिंग का वो। तो लेट मी रन दिस। तो यहाँ पर मुझे रवि मिला बिकॉज फर्स्ट कॉमा के लेफ्ट में रवि है। नाउ अगर मैं यहाँ पर 2 देता हूँ तो एक्सपेक्टेड है कि ये मनोज प्लस रवि, ये स्ट्रिंग मुझे यहाँ पर रिजल्ट में देगा, एज यू कैन सी। बट दिस इज नॉट व्हाट वी वांटेड। वी वांट के मुझे यहाँ पर तीनों अलग अलग मिल जाएं, बट रवि एंड मनोज मुझे साथ में मिल रहे हैं। तो देयर इज अ वे अराउंड टू दिस, वी विल जस्ट सी इट। यहाँ पर मैं नेगेटिव भी लिख सकता हूँ। मैं अगर -1 लिखता हूँ, यहाँ पर मैं नेगेटिव इंडेक्स देता हूँ, तो इट विल एक्चुअली काउंट फ्रॉम बिहाइंड। So Ravi Manoj Surbhi में से it will look at the comma from behind. So from behind there is the first comma from behind, and it will give me Surbhi if I write -1. So Surbhi. So for getting any index, I'll do what? I will use this one more time.
So if I want to get second out of it, like Ravi Manoj Surbhi, if I want to get only Manoj, which is second, I will write this, which gives me Ravi and Manoj. But for on this string, which is Ravi and Manoj, let me just copy it and let me just show you how we're going to do it. So I have got this query's output. I have got this string. On this string again, if I write -1, so it will now go from reverse and it will give me Manoj, which is second. So only Manoj. Now we will combine both those query to get any index after splitting. Let me just show you how we're going to do it. So I'll remove this, and since I'm getting this result, I will capture this result again in another substring query. Select substring index. So I'm giving first string as this, first parameter, which is a string. This is our first parameter. Second parameter is, of course, our delimiter, which is comma, separating by comma, and -1. And let me just run it now and show you. We got some error. Let us see. Okay, so I shouldn't write select here. And see, we've got Manoj. What if I want third? What if I want Surbhi, which is third? So I just need to change this position. I write 3 here and I get what? Surbhi, third. So in this way we are gonna do our splitting part. So let me just go back to what intermediate result we were having, which was this. So from this table we need to get another column for people where we'll have single column for people, single person in single row. So let me just show you how we're going to do it. So I will write this query where it is our intermediate table in a with clause. So I'll write a with t1 as, yes, I'll write this. I'll remove this for now. So let me write select. For now I will write all comma, just for better explanation, all 3 column, and I will write again substring index. I'll just copy this, substring index of substring index, and instead of this I need to give the column name, which is people, as single person. Let me just run this. Okay, we've got run into some error. I need to write from as well, and from is t1 since we made it t1 here. So yeah, and yeah, voila, we have got our output. But there is another problem. We are getting only third person, the last person actually. Why? Because here also we need to make some change. Here we are referring to position, like which position, which person we are talking about, and we need to take help of this column, num column. So I will just write num here, which is different for every row, and this way I will get every different person in each row. So yeah, I have run it and see first row Ravi, because Ravi is the first person. Second person is Manoj. We've got Manoj here. Third person is Surbhi. We've got Surbhi here. And yeah, we are very close to our solution. We just need to do what? Just need to select the required column only. So I will write t1 dot id, which is first. Other is only this column. Yeah. So yeah, we have done it. So this is the way we can solve this in MySQL or maybe in any other SQL version as well. I hope you guys have liked this video. I know ये video थोड़ी सी long हो गई है, but the problem was very interesting to me, and I hope you guys also found it interesting. So please like the video if you learned something new here, and subscribe the channel for more such videos. Thanks for watching.